Hello, Learnegizers, and welcome back to Learnegize, where you learn to strategize. I hope everybody is doing well and pacing up well with the new year. So today's topic is tenses. Tenses sunte hi we get uff, ye kaisa topic aa gaya. It's a very vast topic. It's the biggest topic. It's the most important topic. Oh my god, kaise yaad hoga? I don't know how to perfect my tenses. Yes, that's true. Tenses important hain. टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है टेंसेस? टेंसेस आर इंपॉर्टेंट इन एनी लैंग्वेज या किसी भी ग्रामर के फॉर्म में. कि सिंपल रीजन है, टेंसेस टेल अस द टाइम ओके ऑफ द एक्शन. कब कोई काम हो रहा है जो कि सेंटेंस में मेंशन है या किसी पैराग्राफ में मेंशन है या कोई भी हम आर्टिकल जो पढ़ रहे हैं उसमें मेंशन है. अगर हम टेंसेस सही नहीं लिखते हैं, दैट मीन्स हमारे जो मैसेज हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देयर माइट बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स. सो यस, टेंसेस आर इंपॉर्टेंट, बट टेंसेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये आई डोंट अग्री विद. ओके, सो टेंसेस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. टेंसेस आर नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है. That is what the session is all about. Knowing which tense to be used where, knowing what is the form of the verb to be used with each form of the tense or each category of tense, how many tenses are there, how many types of tenses are there. All these doubts would be cleared in this session. एंड जो हमारे दिमाग में रहता है ना कि टेबल तो सब लोग बता देते हैं कि यू नो ये 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस होते हैं विच वील कवर इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ इन दिस सेशन, बट उनको कहाँ कैसे यूज करूँ, फिर भी मेरे से गलती हो जाती है. आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आई एम अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड, आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई कौन सा टेंस का यूज कहाँ पे होगा या इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है. Trust me, all these doubts would be cleared in this session. And after you watch this video till the end, you will have no doubts as to kaun sa tense kahan pe use hoga. So stay tuned with me till the end. Okay. So let's get started. So basically, I think since eternity, we are aware that there are three tenses: past, present, and future. ओके जिसको हम हिंदी में कल, आज और कल कहते हैं. ओके सो हम सब जानते हैं तीन टेंसेस होते हैं मेजर: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. जो प्राइमरी क्लासेस तक तो हमारी लाइफ बहुत सूदिंग रहती है. वी ऑल नो कि हाँ ये सिंपल है, यही हमको करना है. जैसे जैसे फॉर्म्स एंड कैटेगरीज ऑफ टेंसेस बढ़ते जाते हैं, हमारी टेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, मार्क्स कम होते चले जाते हैं. सो दैट इज वेयर आई प्ले अ रोल. ऑलराइट, सो थोड़ा सा इटर्निटी से कम हम ये जानते हैं कि देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ईच फॉर्म ऑफ टेंस और ईच टाइप ऑफ टेंस: सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो टोटल इन ऑल देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस जिसके अराउंड पूरी ग्रामर रोटेट होती है या रिवॉल्व होती है. एवरीथिंग दैट वी स्पीक fall under all these 12 forms or either one of these 12 forms tenses. ठीक है, तो हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, कहाँ पे कैसे वर्ड्स यूज होंगे टू डिनोट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेंस, ये तो शायद हम सबको पता है. देयर इज अ टेबल दैट आई विल आल्सो शेयर विद यू. उस टेबल को याद करना प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस टेबल को याद करने के बाद उस टेबल को यूज करना, उस टेबल को आइडेंटिफाई, टेंसेस को आइडेंटिफाई करके सही जगह पे उस टेबल का यूटिलाइजेशन करके करेक्ट सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस फॉर्म करना. दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द पेन पॉइंट फॉर मेनी ऑफ अस, दैट आई एम श्योर ऑफ. सो वही सारे डाउट्स हम इस सेशन में क्लियर करेंगे. सो बिफोर आई कम डाउन टू द टेबल एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यू नो, जो वो 12 टेंसेस हैं, उससे पहले आई वुड लाइक टू डिग इनटू where and when and why a particular tense is used. ये पता चल गया ना my dear friends, then it will not be difficult for you to mug up the table and use the correct form of the verb in the correct situation. Okay? तो हमें सिर्फ इतना ही पता लगाना है कि कौन से टेंस का यूज कहाँ पे और कब और क्यों होता है. Okay? पहले हम उसी पे concentrate करेंगे. After this is clear, then we'll move down to the table, then which will be like a piece of cake for you. Okay, so let's begin. The easiest category of the tenses is simple. Okay, basically जहाँ से हम start करते हैं tenses पढ़ना, that is simple tenses, simple form of the tenses: simple past, simple present, simple future. Okay, पहले हम इनका usage देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे use होता है. जैसे कि नाम suggest करता है simple, वैसे इनका usage है बिल्कुल simple, and I'm sure many of us would be absolutely clear about this form. But let's do it. Simple
प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर का मतलब है सिंपली जो काम पहले हो चुका, वन सिंगल एक्टिविटी दैट इज डन इन द पास्ट इज वेयर वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल प्रेजेंट जहां पे अभी एक काम हो रहा है, or rather simple present is also used to show some routine habits, some daily habits, some universal facts. ये सारी चीजें हमारे simple present में cover up हो जाती हैं. Simple future कोई भी ऐसा task या काम जो आने वाले time में होगा. As simple as that. One single task that will happen in future, simple future. One single task that has happened in the past, simple past. Any one single task which is happening right now, or any daily routine habits or any habitual activities that we keep doing, or any universal truth that are prevalent in the world, simple present. Let's do it with the help of some examples. I go to bed at 10 p.m. every day. ये मेरी daily routine है, तो मैंने simple present में go के form में बता दिया. I went to bed at 11 p.m. yesterday. कल रात में जब मैं सोया तो मैं कल 11 बजे सोया. I will go to bed at 9 p.m. tomorrow. So कल मैं जब सोने जाऊंगा in future तो मैं 9 बजे ही सो जाऊंगा. Okay? Simple, simple past, simple present, simple future. Okay? We are clear with this. Let's move down to the next category of the tenses, that is continuous tenses. Continuous का मतलब in language is also जो चल रहा है, something which is happening. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो यूजेज समझ में आता है नाम सुनते ही कि जो काम ऑलरेडी चल रहा है इन द प्रेजेंट. अब पास्ट भी आप बोल रहे हो कि काम हो चुका है, दैट इज वेयर वी यूज द पास्ट टेंस. पास्ट में काम चल कैसे रहा है? Where do we know and sorry, how do we know where do we use these past continuous tenses? या फ्यूचर में काम चल रहा होगा, ये कैसा टेंस हो गया? So let's understand where are the continuous forms of the tenses is used. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि नाम अपने आप में बता रहा है, जो काम अभी हो रहा है, समथिंग विच इज एन एक्शन विच इज ऑन गोइंग राइट नाउ. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन टेंसेस राइट नाउ. ओके, सो दिस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाली बट वी आर श्योर ऑफ. सो आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक. आई एम श्योर ऑफ कि मेरी टिकट्स हो चुकी हैं तो मैं लंदन जाने वाली हूँ. सो आई एम श्योर ऑफ दैट. सो दैट इज वेयर ऑल्सो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां यूज होगा जहां पे एन एक्टिविटी हैज हैपेंड इन द पास्ट फॉर अ व्हाइल. या फिर टू पुट इट नाइसली, टू एक्टिविटीज हैपेंड इन द पास्ट जो पास्ट में ही होके खत्म हो गई हैं, बट वन इज गोइंग ऑन फॉर अ while the other activity interrupts for a short period of time. I'll explain you with the help of an example. I was having my lunch when my friends came to my place. So for a while मैं खाना खा रही थी. I was having my lunch. I was eating my lunch. That is in the past continuous form. और उस एक्टिविटी को इंटरप्ट करते हुए एक और एक्टिविटी हुई पास्ट में. My friends came to my place. ठीक है, तो वो एक्टिविटी शॉर्ट पीरियड के लिए हुई बट मैं लंच कुछ देर से खा रही थी. सो व्हेन देयर आर टू एक्टिविटीज हैपनिंग इन द पास्ट जो हो चुकी हैं पास्ट में, जो एक चल रही है और दूसरी उसको आके थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही है, दैट इज वेयर वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. या जो दूसरा हमने इंसिडेंस बताया पास्ट कंटिन्यूअस का, दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंड इन द पास्ट फॉर अ व्हाइल. लाइक फॉर एग्जांपल, इट वाज स्नोइंग येस्टरडे. ओके, तो कल स्नो गिर रही थी. इट वाज रेनिंग येस्टरडे, कल पानी बरस रहा था. लेट्स लुक एट द यूज ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नाउ. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन प्लेसेस जहां पे कोई काम विल बी हैपनिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होगा आगे आने वाले टाइम में, या कल या परसों या एक घंटे बाद या व्हेनेवर. दैट्स अ फ्यूचर. फॉर एग्जांपल, द बेबी विल बी प्लेइंग फॉर द होल नाइट. अब एक एक्टिविटी जो होगी और वो कुछ देर के लिए होती रहेगी, फॉर द होल नाइट द बेबी विल कंटिन्यू टू प्ले. सो द बेबी विल बी प्लेइंग फॉर द होल नाइट. फ्यूचर कंटिन्यूअस. या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस वहां पे भी यूज होगा जहां पे देयर आर टू एक्टिविटीज विच विल हैपन इन फ्यूचर, ओके, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज ऑन गोइंग. फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, आई विल बी स्विमिंग द होल डे एज इट इज वेरी हॉट. ऑन गोइंग टास्क क्या है? इट इज वेरी हॉट, गर्मी है इसलिए आई विल बी स्विमिंग. ठीक है, दो टास्क जो कि होंगे इन फ्यूचर जिसमें से एक इज ऑन गोइंग. ओके, I hope this makes it clear where do we use the continuous forms of the tenses. Now let's move down to the perfect forms of the tenses. Perfect and perfect continuous में बहुत confusion हो जाता है. It's very difficult at times for us to understand
the usage of perfect and perfect continuous forms of the tenses. So let's make it simple and clear for all of you now. Present perfect, when an action has started in the past but is continuing in the present. Okay. For example, I have been learning English since I was 2 years old. Or for that matter, it's also used for a past event, जो activity पहले हो चुकी है, तो उसका result हमारे पास अभी भी दिख रहा है. So for example, I showered this morning and I'm feeling fresh and happy. So मैंने सुबह शार लिया था. किस समय लिया, that is not important. So the activity is not important. किस time पे लिया, कैसे लिया शार, that is not important. वो past में हो गया. But the result is something that we're talking about in the present perfect form. It's a very important differentiator for present perfect tenses. Okay. So past में काम हो चुका है, but हम काम की बात नहीं कर रहे हैं, but we are talking about the result of the task. Okay. I have showered in the morning and I'm feeling fresh now. अब मैं fresh feel कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह shower लिया था, सुबह लिया था, थोड़ी देर पहले लिया था. Whenever I took the shower. Okay. Shower is not important, but the result is important, that I'm feeling fresh and clean. That is where we use the present perfect tense. Past perfect कहाँ use होगा? जहां पे दो एक्टिविटीज पास्ट में हो चुकी हैं एंड वन स्टार्टेड व्हेन द अदर वन फिनिश्ड. ओके, दैट इज वेयर द फर्स्ट एक्टिविटी जो फिनिश हो चुकी है इज इन द पास्ट परफेक्ट फॉर्म. पास्ट परफेक्ट के लिए देयर इज अ स्लैंग दैट्स यूज्ड इज द पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी दो एक्टिविटीज जब हो रही हैं उसमें से जो पहली एक्टिविटी हो चुकी थी फिर दूसरी स्टार्ट हुई थी, तो जो पहले वाली स्टार्ट हुई थी वो दैट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट. ओके, just to memorize it better. You'll understand this better with the help of an example. Let me give you an example. After I had finished my work, I went to the party. Or okay, so मैंने एक काम पहले खत्म किया फिर दूसरा शुरू किया. After I had finished my work, तो जो पहले खत्म किया that is the work, वो हमारा past perfect form में है. Okay. या फिर कहाँ और यूज हो सकता है पास्ट परफेक्ट इज वेयर देयर इज अ टाइम स्टैम्प अटैच्ड टू एन एक्टिविटी दैट इज हैपेंड इन द पास्ट. जब जहाँ पे हम दो एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हैं ना, वहां पे कहीं टाइम स्टैम्प लगा हुआ है. टाइम स्टैम्प एज इन कितने साल के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम yesterday I had finished 10 modules of English. Okay, so that means टाइम स्टैम्प अलॉटेड है कि इस समय तक कल मैंने इतना किया था. या फॉर एग्जाम्पल, by July last year or by October last year, I had visited 10 countries. Okay, so अब यहाँ पे भी time stamp allotted है for an activity that happened in the past. That is where we use the past perfect tense. Future perfect tense similarly is used for activities जहाँ पे time stamp allotted है for activities that will happen in future. For example, by July next year, I will have finished my graduation. ओके, सो फिर एक टाइम स्टैम्प अलॉटेड है जहां पे हमें पता है कि आने वाले टाइम में आई एम श्योर कि इतने समय तक या इतने सालों के अंदर अंदर ये काम मैं कर चुकी होंगी. ओके, कर चुकी होंगी, आई वुड हैव फिनिश्ड, राइट. सो दैट इज वेयर फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड. द परफेक्ट कंटिन्यूअस, द इजीएस्ट फॉर्म आई वुड से अगेन, like not easier than simple, but yeah, it is easy. So it's very simple. It depicts the time spent on an activity. Okay, so present perfect continuous, it shows you the time spent on an activity that is still going on. Okay, for example, I have been practicing as a doctor for the past 2 years now. I have been making videos on English grammar for the past 2 months now. Okay, so इस तरह के examples are the places जहाँ पे time spend कितना हुआ है अभी तक किसी काम को करते हुए, जो काम अभी भी चल रहा है, that is where we use present perfect continuous. Similarly, जो time spent on an activity that happened in the past, where we used past perfect continuous. So for example, I had been studying for 3 hours before I went to bed. Went to bed is a past activity. कितना time मैंने spend किया उस पढ़ने पे? 3 hours. Okay, so past perfect continuous. Similarly, future perfect continuous, talking about the time spent on an activity that will happen in future. So for example, we will have been waiting for the bus for 30 minutes. Okay, so हम आगे आने वाले काम में हम जो करेंगे, हम बस के लिए वेट करेंगे. कितने टाइम के लिए वेट करेंगे? 30 minutes के लिए वेट करेंगे. So this is pretty simple. Perfect continuous form of the tense is only depicting the time spent on a particular activity which is going on right now, which happened in the past or which will happen in the future. I hope that's clear. So this is how we can recognize कि कौन सा form या कौन सी category या कौन सा type of tense is used where and when. Now once this is clear in your head, guys, let me tell you, it will be very easy and it will be very simple for you to learn or mug up the table
कि कहाँ पे कौन सा form of verb use होगा, कौन से helping verbs use होंगे to denote which form of tense. So now when we are clear with the usage of the tenses, let's move down to the form of the verb which will be used in each of these tenses and their categories. Okay, let's start with simple present. In the simple present tense, we use the base form of the verb with an S. For example, eat, work, drink, sleep, drive, etc. We say, I drink milk every day. I go to school every day. You go to school every day. They go to school every day, right? For a negative sentence, we use a don't or never for the simple present tense. So, for example, I never get up early in the morning. You don't help your mom. So majorly adverbs of frequency are generally used in this form of the tense, that is in the simple present. Regularly, always, sometimes, often, never. Okay, I never get up early. Okay, so this is another tip. This is a very small tip for simple present tense and the verbs used in this form. Let's move down to simple past. For simple past, we use the second form of the verb. Okay, the second form of the verb plus ed. So, for example, I went to school yesterday. She went to the market with her mom, and so on. Okay, and for the negative sentences in the simple past, we use did not. Okay, so I did not go to school, but always remember, it's very important to note down that for with did always uses the first form of the verb only. Okay, so I did not went to school is incorrect. We don't say I did not went to school. I did not go to school. Okay, so did will always use the first form of the verb only. All right. Now let's talk about the simple future tense. Simple future tense uses will plus the base form of the verb. I will go to school tomorrow. Okay. A tip to recognize when to use simple future is when you can add a maybe, when you are not very sure of whether this will be done or not. For example, I will go to the party tomorrow. Maybe or maybe not. Okay. So you're not sure. So I will go to the party tomorrow. Okay, I will be going to the party नहीं होगा यहाँ पे because I will be going to the party show gives a surety. यहाँ पे जहाँ पे आपको maybe है future task के अंदर या future activity के लिए, there you will use the simple future tense. Okay, I hope that helps. Let's move down to the continuous tenses now. Okay, so for the present continuous tense, we use the ismr, that is the be form of the verb, plus the base form of the verb and plus ing. Okay, for example, I am reading a book. She is reading a book. Okay. They are reading a book. So is MR, the be form of the verb, which is required for the continuous tense, plus the base form of the verb plus ing. Okay. Hope that helps. Moving down to the form of the verb used in past continuous tenses, we use was or were plus the base form of the verb plus ing. For example, I was reading a book. They were reading a book. They were going to the market. Okay. For the future continuous tense, we say will be plus base form of the verb plus ing. For example, I will be going to the market tomorrow. They will be doing their homework tomorrow. Okay. Moving down to the perfect form of the verb tenses. Perfect tenses use the third form of the verb. Okay. Talking about the present perfect tense, it uses has or have plus the third form of the verb. Third form of the verb can be made by adding ed to the end of the verb for the regular verbs. But for the irregular verbs, you'll have to learn the entire list. Okay. So for example, I have finished my homework before going to the party. I have finished my work before going to the party. Ria has completed her degree from Lucknow University. The adverbs like never, ever, since, already, yet are used with the perfect forms. For example, I have never been to Korea. Okay. Moving down to the past perfect tense, past perfect uses had plus the third form of the verb. Okay. For example, I had finished my breakfast before my friends arrived. Okay. For future perfect tenses, we use will have plus the third form of the verb. For example, I will have finished my degree by next year, July. I will have finished my homework by 6 p.m. today. Okay. Now let's do the last type of the tenses, that is the perfect continuous. Okay. The present
perfect continuous tenses uses has been or have been plus base form of the verb plus ing. Okay. For example, I have been waiting for this event since very long. Okay. They have been studying since 10 o'clock in the morning today. The past perfect continuous tenses used had been plus the base form of the verb plus ing, because continuous always uses the ing, okay, whether it's perfect or simple continuous. For example, I had been studying for 2 hours when my mom came inside the room. She had been running for an hour when she got tired. All right? The future perfect continuous tense, the last one here, you can be happy now, uses will have been plus verb plus ing. That is the base form of the verb plus ing. Let's look at the examples. Arun will have been waiting for the bus since the morning. Neeta will have been working in the company for 5 years by now. They will have been studying all night. Okay. So these were certain tips and tricks for the tenses, with some rules and regulations for the tenses, and also with the usage of the tenses. So yes, it's very important to know the usage more than or before even you know the rules or the table of the verbs used in the various forms of the tenses. क्योंकि जब आपको ये पता होगा तुरंत का तुरंत सेंटेंस देखते ही या सिचुएशन देखते ही कि मुझे कौन सा टेंस लगाना है, तो आपको टेबल से निकाल के लगाना would not be that difficult. Okay, टेबल याद रहता है, बट टेबल को कहाँ पे कैसे यूज करना है यही प्रॉब्लमैटिक है, which has been clearly explained in the session. I hope that was helpful. Do let me know in the comment section in case you need any special attention or any other particular doubt that you have which you need clarity on. I will surely reply to all the comments as soon as possible. Thank you so much for now. Keep learning, keep enjoying. Bye-bye.